उड़ान से बस 1 मिनट 10 सेकंड दूर हम लोग, और जैसे मेरी सहयोगी माधुरी जी ने बताया आपको कि हम लोगों ने आज सुबह ये हवा की रफ्तार गति नापी है और इस मापन को हमने अपने मिशन सिमुलेशन प्रोग्राम में डाला है और कौन सी एंगल से किस धरती से कितना एंगल बनाते हुए ये रॉकेट उड़े ताकि हम जो चाहते हैं, जो कक्षा हम चाहते हैं, जो ऊंचाई हम चाहते हैं वो हमें मिले। ये माधुरी जी ने बताया आपको। रॉकेट का व्यू लॉन्च से सिर्फ 30 सेकंड दूर। हम अब ज्यादा बोलने वाले नहीं हैं, कुछ देर तक हम आपके साथ मिल करके इस रॉकेट की व्यूज को एंजॉय करेंगे। लास्ट फ्यू मिनट्स, लास्ट फ्यू सेकंड्स, 20 seconds, we momentarily go quiet and we feel the launch along with you. We enjoy the launch along with you. Just 10 seconds to launch. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Event number 96 completed. And we have a successful liftoff of Vikram-S rocket. I think I should be able to show you the jubilant environment here at the Mission Control Center where the entire team is celebrating the launch and the spin stabilized rocket. The views from the launcher camera. In a few seconds, the vehicle will undergo the condition of maximum aerodynamic pressure followed by the motor burnout, and we will get you those confirmations shortly. The vehicle will experience Qmax around 15 seconds, and at the same time maximum aerodynamic loads will occur. Just to remind the viewers, this is an aerodynamically stabilized launch azimuth, as I said, and this is what is required for this mission. This is a standard procedure for all the suborbital rocket launches from SDSC. उड़ान से बस 1 मिनट 10 सेकंड दूर हम लोग, और जैसे मेरी सहयोगी माधुरी जी ने बताया आपको कि हम लोगों ने आज सुबह ये हवा की रफ्तार गति नापी है और इस मापन को हमने अपने मिशन सिमुलेशन प्रोग्राम में डाला है और कौन सी एंगल से किस धरती से कितना एंगल बनाते हुए ये रॉकेट उड़े ताकि हम जो चाहते हैं, जो कक्षा हम चाहते हैं, जो ऊंचाई हम चाहते हैं वो हमें मिले। ये माधुरी जी ने बताया आपको। रॉकेट का व्यू लॉन्च से सिर्फ 30 सेकंड दूर। हम अब ज्यादा बोलने वाले नहीं हैं, कुछ देर तक हम आपके साथ मिल करके इस रॉकेट की व्यूज को एंजॉय करेंगे। लास्ट फ्यू मिनट्स, लास्ट फ्यू सेकंड्स, 20 seconds, we momentarily go quiet and we feel the launch along with you. We enjoy the launch along with you. Just 10 seconds to launch. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Event number 96 completed. And we have a successful liftoff of Vikram-S rocket. I think I should be able to show you the jubilant environment here at the Mission Control Center where the entire team is celebrating the launch and the spin stabilized rocket. The views from the launcher camera. In a few seconds, the vehicle will undergo the condition of maximum aerodynamic pressure followed by the motor burnout, and we will get you those confirmations shortly. The vehicle will experience Qmax around 15 seconds, and at the same time maximum aerodynamic loads will occur. Just to remind the viewers, this is an aerodynamically stabilized launch azimuth, as I said, and this is what is required for this mission. This is a standard procedure for all the suborbital rocket launches from SDSC. उड़ान से बस 1 मिनट 10 सेकंड दूर हम लोग, और जैसे मेरी सहयोगी माधुरी जी ने बताया आपको कि हम लोगों ने आज सुबह ये हवा की रफ्तार गति नापी है और इस मापन को हमने अपने मिशन सिमुलेशन प्रोग्राम में डाला है और कौन सी एंगल से किस धरती से कितना एंगल बनाते हुए ये रॉकेट उड़े ताकि हम जो चाहते हैं,
जो कक्षा हम चाहते हैं, जो ऊंचाई हम चाहते हैं, वो हमें मिले। ये माधुरी जी ने बताया आपको। रॉकेट का व्यू लॉन्च से सिर्फ 30 सेकंड दूर। हम अब ज्यादा बोलने वाले नहीं है, कुछ देर तक हम आपके साथ मिल करके इस रॉकेट की व्यूज को एंजॉय करेंगे। लास्ट फ्यू मिनट्स, लास्ट few seconds, 20 seconds, we momentarily go quiet and we feel the launch along with you. We enjoy the launch along with you. Just 10 seconds to launch. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Event number 96 completed. And we have a successful liftoff of Vikram-S rocket. I think I should be able to show you the jubilant environment here at the Mission Control Center, where the entire team is celebrating the launch and the spin stabilized rocket. The views from the launcher camera. In a few seconds, the vehicle will undergo the condition of maximum aerodynamic pressure, followed by the motor burnout, and we will get you those confirmations shortly. The vehicle will experience Qmax around 15 seconds, and at the same time maximum aerodynamic loads will occur. Just to remind the viewers, this is an aerodynamically stabilized launch azimuth, as I said, and this is what is required for this mission. This is a standard procedure for all the suborbital rocket launches from SDSC. उड़ान से बस 1 मिनट 10 सेकंड दूर हम लोग, और जैसे मेरी सहयोगी माधुरी जी ने बताया आपको कि हम लोगों ने आज सुबह ये हवा की रफ्तार गति नापी है, और इस मापन को हमने अपने मिशन सिमुलेशन प्रोग्राम में डाला है, और कौन सी एंगल से किस धरती से कितना एंगल बनाते हुए ये रॉकेट उड़े, ताकि हम जो चाहते हैं, जो कक्षा हम चाहते हैं, जो ऊंचाई हम चाहते हैं, वो हमें मिले। ये माधुरी जी ने बताया आपको। रॉकेट का व्यू लॉन्च से सिर्फ 30 सेकंड दूर। हम अब ज्यादा बोलने वाले नहीं है, कुछ देर तक हम आपके साथ मिल करके इस रॉकेट की व्यूज को एंजॉय करेंगे। लास्ट फ्यू मिनट्स, लास्ट few seconds, 20 seconds, we momentarily go quiet and we feel the launch along with you. We enjoy the launch along with you. Just 10 seconds to launch. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Event number 96 completed. And we have a successful liftoff of Vikram-S rocket. I think I should be able to show you the jubilant environment here at the Mission Control Center, where the entire team is celebrating the launch and the spin stabilized rocket. The views from the launcher camera. In a few seconds, the vehicle will undergo the condition of maximum aerodynamic pressure, followed by the motor burnout, and we will get you those confirmations shortly. The vehicle will experience Qmax around 15 seconds, and at the same time maximum aerodynamic loads will occur. Just to remind the viewers, this is an aerodynamically stabilized launch azimuth, as I said, and this is what is required for this mission. This is a standard procedure for all the suborbital rocket launches from SDSC. उड़ान से बस 1 मिनट 10 सेकंड दूर हम लोग, और जैसे मेरी सहयोगी माधुरी जी ने बताया आपको कि हम लोगों ने आज सुबह ये हवा की रफ्तार गति नापी है, और इस मापन को हमने अपने मिशन सिमुलेशन प्रोग्राम में डाला है, और कौन सी एंगल से किस धरती से कितना एंगल बनाते हुए ये रॉकेट उड़े, ताकि हम जो चाहते हैं, जो कक्षा हम चाहते हैं, जो ऊंचाई हम चाहते हैं, वो हमें मिले। ये माधुरी जी ने बताया आपको। रॉकेट का व्यू लॉन्च से सिर्फ 30 सेकंड दूर। हम अब ज्यादा बोलने वाले नहीं है, कुछ देर तक हम आपके साथ मिल करके इस रॉकेट की व्यूज को एंजॉय करेंगे। लास्ट few minutes, last few seconds, 20 seconds, we momentarily go quiet and we feel the launch along with you. We enjoy the launch along with you. Just
10 seconds to launch. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Event number 96 completed. And we have a successful Event number liftoff 98 of completed. Vikram-S rocket. I think I should be able to show you the jubilant environment here at the P3 Mission track. Control Center, where the entire team is celebrating the launch and the spin stabilized rocket. The views from the launcher camera. In a few seconds, the vehicle will undergo the condition of maximum aerodynamic pressure, followed by the motor burnout, and we will get you those confirmations shortly. The vehicle will experience Qmax around 15 seconds, and at the same time maximum aerodynamic loads will occur. Just to remind the viewers, this is an aerodynamically stabilized launch azimuth, as I said, and this is what is required for this mission. This is a standard procedure for all the suborbital rocket launches from SDSC. उड़ान से बस 1 मिनट 10 सेकंड दूर हम लोग, और जैसे मेरी सहयोगी माधुरी जी ने बताया आपको कि हम लोगों ने आज सुबह Minus ये 1 minute. हवा की रफ्तार गति नापी है, Minus और 45 इस मापन seconds. को हमने अपने मिशन सिमुलेशन प्रोग्राम में डाला है, Minus 50 seconds. और कौन सी एंगल से किस धरती से Minus कितना 40 एंगल बनाते seconds. हुए ये रॉकेट उड़े, ताकि हम जो चाहते हैं, जो कक्षा हम Minus चाहते हैं, जो 40 ऊंचाई हम seconds. चाहते हैं, वो हमें मिले। ये माधुरी जी ने बताया आपको। रॉकेट का व्यू Minus 30 seconds. लॉन्च से सिर्फ 30 सेकंड दूर। हम अब ज्यादा बोलने वाले नहीं हैं, Minus कुछ देर 30 तक seconds. हम Event आपके number साथ मिल 80 करके completed. इस रॉकेट की व्यूज को Minus एंजॉय 25 करेंगे। seconds. Last few minutes, last few seconds, 20 seconds, we Minus momentarily 20 go seconds. quiet, and we feel the launch along with Minus you. 15. We enjoy the launch along with you. Just 10 seconds to launch. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Event number 96 completed. And we have a successful Event number liftoff 98 completed. of Vikram-S rocket. I think I should be able to show you the jubilant environment here at the P3 Mission track. Control Center, where the entire team is celebrating the launch and the spin stabilized rocket. The views from the launcher camera. In a few seconds, the vehicle will undergo the condition of maximum aerodynamic pressure, followed by the motor burnout, and we will get you those confirmations shortly. The vehicle will experience Qmax around 15 seconds, and at the same time maximum aerodynamic loads will occur. Just to remind the viewers, this is an aerodynamically stabilized launch azimuth, as I said, and this is what is required for this mission. This is a standard procedure for all the suborbital rocket launches from SDSC. उड़ान से बस 1 मिनट 10 सेकंड दूर हम लोग, और जैसे मेरी सहयोगी माधुरी जी ने बताया आपको कि हम लोगों ने आज सुबह Minus ये 1 minute. हवा की रफ्तार गति नापी है, Minus और 45 इस मापन seconds. को हमने अपने मिशन सिमुलेशन प्रोग्राम में डाला है, Minus 50 seconds. और कौन सी एंगल से किस धरती से Minus कितना 40 एंगल बनाते seconds. हुए ये रॉकेट उड़े, ताकि हम जो चाहते हैं, जो कक्षा हम Minus चाहते हैं, जो 40 ऊंचाई हम seconds. चाहते हैं, वो हमें मिले। ये माधुरी जी ने बताया आपको। रॉकेट का व्यू Minus 30 seconds. लॉन्च से सिर्फ 30 सेकंड दूर। हम अब ज्यादा बोलने वाले नहीं हैं, Minus कुछ देर 30 तक seconds. हम Event आपके number साथ मिल 80 करके completed. इस रॉकेट की व्यूज को Minus एंजॉय 25 करेंगे। seconds. Last few minutes, last few seconds, 20 seconds, we Minus momentarily 20 go seconds. quiet, and we feel the launch along with Minus you. 15. We enjoy the launch along with you. Just 10 seconds to launch. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Event number 96 completed. And we have a successful Event number liftoff 98 completed. of Vikram-S rocket. I think I should be able to show you the jubilant environment here at the P3 Mission track. Control Center, where the entire team is celebrating
The launch and the spin stabilized rocket. The views from the launcher camera. In a few seconds, the vehicle will undergo the condition of maximum aerodynamic pressure followed by